जय श्री कृष्ण प्रिय प्रिय भक्तजन देवियों सजनों और छोटे छोटे बच्चों भी है मेरा ओर से मैं सभी को जय श्री कृष्ण का मैं भेंट करना चाहता हूँ सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है और ये है क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद पंडित विशाल शर्मा। You can ask any questions you want in both Hindi and English and I will explain to you to the best of my knowledge. And if there is something that I don't know about, I will, honestly say that, I don't know anything about that topic or that answers. And, just like always, incoming mail are always the first on the agenda. And then I will go on to the email on YouTube and see what people have asked. Okay, let's see what I've put the mail. Oh my God, it's already... I made a New Year's resolution to be more organized, and already that resolution is not being fulfilled. LOL, LOLLL, ROF, LOL. Okay, the first letter is from Pooja Pandit Ji, आपके चरणों में प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा मनोकामना सब सिद्ध होया। मैं विवाह करना चाहता हूँ पर once again, this is from Alalita Kumar कि मैं विवाह करना चाहता हूँ पर मुझे अफसोस है कि कुंडली बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मैं कुंडली बैठाना चाहता हूँ। Okay, I'm gonna keep this one personal. This is very personal. You'll get the information later. Anything that has to do with kundali or making kundalis or a horoscope, those things are personal. I cannot discuss that over the YouTube or internet because it's personal and confidential. I'm going to mail you the exact details and you'll be very successful. भगवान करे कि आपकी शादी शुभ हो, किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं हो, किसी तरह का कष्ट नहीं हो, भगवान मनोकामना सिद्ध हो, भगवान करे कि दुख का प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है? Let's see what's next on the email. परम पूज्य आचार्य पंडित विशाल शर्मा जी, आपके चरणों में सादृश प्रणाम। मेरा नाम है अनिल देव तिवारी। मैं आपका भागवत रामायण और सभी का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं रोज़ आपका भजन कीर्तन सीरीज़ मैं सुनता हूँ और सभी को सुनाता हूँ। Not less I cannot read this. This is like way beyond my level of comprehension. Okay, not less than 6 months ago, I have seen a dream where I am in the desert and I am thirsty for water. Can you please, it's like you write half in Hindi and half in English. मैं प्यासा हूँ, तालाब नहीं मिले, तब सपना टूट गया। जब सपना टूट गया तब देखता है आगे तालाब है। मैंने मन में सोचा कि ये फीजी नहीं हो सकता, यह सपना कैसन है, कृपा करके बता दिए। And then it goes on and on. मुझे आपका भेजा हुआ सीडीज मिला, सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, कृपा करके बताइए। मेरा हाथ पाँव में दर्द होता है, इसका कोई अर्थ है कि सपन के आधार में क्या होता है, लोग सपन क्यों देखते हैं, सपन का तरीका क्या है। Okay, I cannot read this last part. This last part is very entirely, I just want to open, my goal is to open a business and I just want to know, can you open this business? This is my, again, this has to do with kundali and anything like that. Now anytime you write a letter requesting to have your kundali read, your horoscope read, that is personal and confidential. I will mail you the exact details in the mail.
My mail is at the bottom. My mail is at the bottom. Feel free to give me a buzz. But things like that I cannot discuss on YouTube. I cannot discuss on Facebook. I can email you. You can email me at supremelordkrishna@yahoo.com. मेरा email है supremelordkrishna@yahoo.com. You can email me anything you want. It'll be completely personal and confidential. Now this is a very, very good response. Question about dreams. Where do dreams come from? Dreams are imprints of the future. एक ग्रंथ है, उसका नाम है स्वप्न विचार. हर ब्राह्मण के पास होता है. कर्म कांड होता है, ठीक है. स्वप्न विचार भी होता है. अनेक प्रकार का क्रीड़ा भी होता है. विवाह कराने के लिए अलग बुक होता है. मर्गी के काम कराने के लिए अलग बुक होता है. यह सब सिद्धांत कराने के लिए अलग अलग बुक होता है. और एक है विवाह संस्कार अलग है. भृगु संहिता अलग है, जो आपको ज्योतिष के बारे में बताता है. वो अलग बात है. वो सब पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल होते हैं. यूट्यूब में ये सब बात नहीं होता है. मैं कृपा करके आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा. हम लोग कौन कारण से सपन देखता है, वाई डू वी ड्रीम, कौन कारण से, बिकॉज भगवान हम लोग का स्वप्न में आके बताते हैं, हम लोग का भविष्य के बारे में बताते हैं. ठीक है. आपने स्वप्न देखे कि आप पानी के प्यासा है. पानी का अर्थ क्या होता है? पानी का अर्थ है ज्ञान. और आप जगह जगह भटकते हैं कि पानी नहीं मिले, पानी नहीं मिले, पानी नहीं मिले, और देखते हैं कि वहां पर बड़े तालाब है, लेकिन तालाब लुप्त हो गया, और मन में विचार किए कि फीजी नहीं है. आप किसी चीज के चिंतित है. वो स्वप्न का अर्थ है. पानी जब देखता है उसका मतलब है कि आप कुछ पाने चाहते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है. ठीक है. जीवन में कठिनाई होगा. डेजर्ट के सपन कठिनाई बताते हैं. कठिनाई का अर्थ ये है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. आपने कहा है चिट्ठी में कि आपको बिजनेस का आवश्यकता है. आप बिजनेस चाहते हैं ना, लेकिन बिजनेस चाहने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. The first couple of years in any business, I got to be very honest. I'm a priest, I'm a Brahmin, my forefathers were Brahmins, and I have to be very honest. The first couple of years in any business, you're not going to do very well. You're going to suffer. You're going to suffer. For example, I'm going to school, I'm working towards my master's degree in psychology. I am an assistant to a psychologist. I work in a psychology center. The psychologist that I work for told me that if he were to go and open up his own private practice, the first couple of years you're going to suffer. The first couple of years in any business is suffering. There's no ifs, ands, or buts about it. I'm not, saying that I'm, disheartening you or anything. Bhagwan ne kare ki aapka man chota rahe. But one thing you got to realize, in any business there is struggle. There is net loss. There is net gain. There are profits and there are unprofits. Those are all the, laws and regulations of business. And your dream forecasts that there's going to be a lot of hardships in any business. And it comes with the trade. But it doesn't mean that you're not going to be successful. मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप बिजनेस में हासिल करने चाहते हैं, एक छोटा सा मंत्र है. 108 बार हमेशा ये मंत्र का जाप करो. ओम ऐं लक्ष्मै नमः. ओम ऐं लक्ष्मै नमः. ओम ऐं लक्ष्मै नमः. 3 बार, 108 बार माला लेकर जाप करो. नहीं तो 108 बार इस मंत्र का जाप करो. ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम. जो मंत्र है श्रीम, वो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है. आप दोनों मंत्र का भी जाप कर सकते हैं. आपका बिजनेस का उन्नत होगा, आपका नेटवर्किंग होगा. ठीक है. अच्छा, let's see what's on the email. I'm clicking here. Oh my god, I can't believe the mouse is stuck. I gotta go get a new mouse. Dear Pandit Vishal Sharma Ji, I'd like to humbly bow at your feet. Ayushman Bho, Gunwan Bho, Kirtiman Bho, Yashashvi Bho. I want to know something. I know that you are very talented in playing music and bhajans and kirtans. You have done a lot of local competitions. I've heard you sing against
Deodat Chandil in Fiji. But I was wondering, like, how many instruments can you play? Can you play any other instruments besides the harmonium and dholak? I was just curious. The harmonium and dholak is all that I know. And I can play a little bit of the mandolin and a little bit of the tabla, but it's too frustrating. I tried learning the tabla so much. It is so hard. It is so frustrating. There's a big difference between learning how to play the dholak and learning how to play the tabla. The dholak is a lot easier. The dholak is a lot simpler. It is a more simplified version of the tabla. But what the main difference that I have noticed is that with the tabla, you have to be able to play like every note. Like when you're singing and playing with the harmonium, you sing one line and then there's music and the dholak follows, right? Dholak just follows the music patterns. But with the tabla, you have to hit every single note on the dot. Every single note on the dot, you have to hit it. And it is so frustrating. It is beyond my control. One time I felt so angry, so I just gave up. I was completely disheartened and I just gave up. 6, 7, it took me about 7 months to learn a few tals on tabla, but after that I just gave up and said forget it. I'm very happy with just the harmonium and dholak. I'm content. But even though with the dholak, there's much need. There's much more room for improvement. I can still improve a lot in dholak. I'm not very good. I can play dholak in bhajans and kirtans and lokgeets and chotals too. I can play the dholak in chotals and fagwa, but there's still much need for improvement. There's so many tals that I don't know. I mean, it is still very frustrating sometimes. Yeah, there's still much more room for improvement. And now I'd like to, end my YouTube session here for now. There's a young boy whose name is Arjun Singh, right? And in my last response, there was a young man who was born from a Kshatriya family, but he has a very good heart, very good intentions, and he has desires to become a Brahmin. I want to make this nice and clear that there is nowhere in our Hindu scriptures that it is written that you have to be born in a Brahmin family to become a Brahmin. There is nowhere that it is written. Even though the Veda says Brahmana mukase bahur rajannikrita vaishya urjo jayata gwam shudra utpato jayata. They meaning that Brahmins from the mouth, Kshatriyas from the arms, Vaishyas from the stomach and thighs, and Shudras from the feet. It is only a symbol. That means anyone who is wise, anyone who is brilliant is a Brahman. Anyone who has sattvic nature, anyone who has a good heart is a Brahman. People who are strong in administrative class, kingly class, those are Kshatriyas, businessmen, and then they are servants. Arjun Singh, this goes out to you, your family. भगवान करे कि आप सब ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बने. भगवान करे आप मुझसे भी अधिक विद्वान बने. जितना विद्या मेरा पास है, भगवान करे कि आपके दुगना मिले, त्रिगुना मिले, 10 गुना और मिले. भगवान करे आपके बहुत महानता मिले. भगवान करे कि आपके बड़े बड़े मंदिर में आपका प्रचार हुए. भगवान करे कि आप बहुत नाम कमाओ. भगवान करे कि आप सर्व ब्राह्मण में से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बने. एकदम हो सकता है. जो कोई क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं या वैश्य या शूद्र कुल में पैदा होते हैं, अगर जिसके ब्राह्मण बनने का इच्छा है, ठीक है, उसका अंतर्घट का भावना देखो कि उसका अंतर्घट का भावना क्या है. अगर जो चाहते कि लोगों को उपकार करे, ठीक है, उसका सात्विक भावना है, तो निसंदेह वो ब्राह्मण हो सकता है, एकदम हो सकते हैं. ये मेरा आशीर्वाद है, यह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है. और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा विस्तार से यह बात कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकरम विभागशाम, कि मैंने 4 वर्ण का सृष्टि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मनुष्य का गुण और कर्म के आधार मैंने किए हैं. प्रिय अर्जुन जी, आप जाके ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण का पद भी आपका मिलेगा. आप निसंदेह एक ब्राह्मण है, इस बात का किसी का डाउट नहीं है.
और मैं एक बार में जरूर मैं कहना चाहता हूँ, विस्तार से थोड़ा संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि जन्म लेने वाला हर व्यक्ति शूद्र होते हैं। मैं भी शूद्र था। मेरा माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं, परदादा पराजी परना सब ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी मैं जन्म से शूद्र था। जन्म जायते शूद्रता कर्माणि ब्राह्मण। ठीक है, मैं भी जन्म से शूद्र था। मैं ब्राह्मण कैसे बना? जब मैंने ब्राह्मण कर्म किया तब मैंने ब्राह्मण बना। ठीक है, इसीलिए पूरा संसार में जितना सब व्यक्ति है, जितना सब मनुष्य है, सब जन्म से शूद्र होता है, शूद्र पैदा होता है। फिर वो अपन कर्म के आधार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। ये बात प्रमाण है मनुस्मृति। अच्छा, जय श्री कृष्ण। मेरे ओर से सबके आशीर्वाद, भगवान करे सब मंगल करे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्वणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजता मया देवी परिपूर्ण अस्तदुस्तु मे परिपूर्ण अस्तदुस्तु मे परिपूर्ण अस्तदुस्तु मे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।